So, good morning, all. And today is our first day. First of all, I'll give you some introduction about Career Counter and what kind of courses we are providing, how many students we place till now, and all. And then we'll start our actual training. This is the first day. Okay. And every session we are going to record. So, in case if anybody has missed anything, then we are having our YouTube channel where we are creating every batch playlist. You will get access for that, and then you can cover from that if you miss any session. Okay, because many times some guys are joining as a like they are working somewhere and it is not possible for them to attend every time. So that was the reason we used to record it. So we are taking this training from last four and a half year. From 2021 we are taking this, and till now we train more than 100 students and place more than 80 students. Okay, we are not targeting like more people. Like, even though we are having only 5 admission, then also we used to take the training, and every batch is only for 1 month, and every month we used to take the training. Okay, so training mode will be online, and duration will be 30 to 40 days, even though I mention it as a 1 month, but sometimes uh, at last we used to do some interview practice, and also maybe it will take one more week. Okay, so you can see here these many batches we have taken till now. Okay, and who all are eligible? So every graduation, whatever graduation you did, is eligible. If somebody is pursuing graduation, then also many companies are considering. Okay, but you should have some degree that is good and well to enter into the MNCs. Okay, especially for big companies like Wipro, Cognizant. Okay, such kind of big companies required one of the graduation. Okay, so you should have it. I also work with 3 to 4 MNCs till now. Okay, and my experience here is almost 12 years in this field. Okay, I started my career with associate, then senior associate, then team leader, then assistant manager. Okay, so US, obviously we are working for the US hospitals, so it will be a US shift. Shift timing will be 5:30 to 2:30, or sometimes daylight saving will be there, so it will shift to 6 to 3 a.m. And you will get cab facility. Some companies are providing dinner facility. You will get shift allowance. You will get if you are not using cab, then you will get a petrol allowance, and then you will get a healthcare insurance for your family. Okay, and salary growth is also good. Okay, the eligibility is only you should have some graduation, you should have good communication. Okay, in this training we are not covering any communication sessions. Okay, and ready to work from office. Very few companies are providing work from home nowadays, and it's hard to work or achieve the target from work from home because nobody will be there to help you. It is good to go to the office. Someone will be there to help you. Okay, and within a time we are able to do our target. At home, many times we'll extend our shift and all. So better is if you select or choose to go to the office, then it is good and well. Okay, sometimes we have to go outside of our comfort zone for our career growth, right? So I also started my career as a fresher. I did first company I worked only for 4 months. Okay, I started with only 5,500. Then after 4 months I got a offer of 22,000. Okay, in within a 4 month experience. Then I switched to one of the company in Kerala. I was there for almost 3 year. Within a 3 year, I got promoted as a TL also. I was handling almost 60 people under me. Okay. So like that, uh, after that again I switched to the Hyderabad in Cognizant. After that again I switched to Pune. Like that, you can also. I'll definitely guide you for your career, how you can start, when you can switch. Okay. So don't worry. So you should be ready to relocate. Many of us is uh,
trying to get a job within a comfort zone or within our city only. But if you really want to make your career, you should go to other location as well. If somebody is providing you any opportunity, you can come back. That is the last priority actually. Okay, first time if you are starting your career, then don't worry about the salary, how much you are getting. Don't worry about the company designation and the location. Second time if you are switching, then only go for salary. Don't worry about the location and designation. Third time, you should try for designation. And fourth time, finally, you should select the city where you can stay for long time. But everybody is having the last priority is as a first priority. Okay, so you can think about it. Designation will be AR caller, AR associate, AR analyst. Who are AR analysts? They are used to work in day shift. Okay, and the callable account, they are forwarding it to the night shift people. Okay, and some more departments are there. We'll see that for which department you are eligible to apply. Not only for the denial management as a AR, but there are 3 to 4 more departments where you can apply. Okay, it's a semi-voice process. We don't have to call so many. Okay, and you don't have to sell any product. At least 8 to 10 calls are enough, and it's an outgoing call. Whenever required, then only we are calling to US insurances. Don't worry about the calling part at this point. Okay, it's very easy. It's a scripted call. We already know in every scenario what question need to be asked to insurance representative. There is no other discussion on call. Okay. So at this point, don't worry about the calling. At least you should be able to attend the interview in English. That is more than enough. Then later, the calling part and all, everything will be covered in our training. Okay, starting salary, obviously, in any field, it will be less salary because you don't have any knowledge, and company also will not get any productivity. Okay, from your side at least for 6 months. Okay, so that's the reason. Consider that you are getting money for learning things, okay? Learning process in big companies. If you are going from our previous batches, many students join Wipro, many students join R1 RCM, many students join Cognizant. Such kind of big companies are having 1 to 2 months of training for everyone. Even though you are going as a fresher experience, you have to attend that training, and then only you can go to floor. Then only you will get a credential for application, and then only you will start your work. But 2 months training will be there again, same kind of training. Okay, so fresher, as a fresher you can think, means you can expect near to 2.4 lakh per year. Okay, and as I said, there will be a extra excess amount above your salary. That is the night shift allowance will be different apart from your CTC. If you are not using cab, then you will get a uh, petrol allowance, and incentive is also there. Up to 8,000 incentive is there in most of the companies. Depend on your performance, how many target or extra amount account you are doing with quality. Okay, and later after 6 months, definitely you can switch, and easily you can get about 25,000 anywhere. Okay, I'm just giving you the minimum amount. It depend on your current salary. It depend on your interview. It depend on your discussion with HR how you can try. And many companies are providing joining bonus as well. Who can join immediately up to 50, 60,000. Also, they are ready to pay. I also got in 2 companies a joining bonus. In one company 50,000, in one company 80,000. Okay, after experience. For fresher, nobody will provide you joining bonus, right? So 1 year experience, about 30, 35,000 we can expect. Okay, I'll not give you a wrong numbers. Okay, and I'll not commit you wrong commitments. Okay, 2 year plus experience. Obviously, you can get above 40,000, and 3 year plus experience up to 75,000 can get. And from our previous batches students, okay, they are also nowadays they are near to 60,000. Okay, I can show you their offer letter as well. Okay, and we can call some students uh, in some sessions. If you are having any queries, how they started their career and how many days they struggle to do a work.
and how many companies they have switched. Okay, whatever questions you are having in your mind, you can ask them. Okay, so this is the revenue cycle management. This process is also called as revenue cycle management, also called as US healthcare, also called as medical billing. Okay, so how many boxes you are seeing in the this diagram? These many departments are there in every company. Okay, and from this you can apply for four departments. So first is the patient appointment, and then eligibility and benefits verification. Here you can apply. There is a one more department as a pre-authorization. Here also you can apply. There is a one more department, EDI or clearing house. They are working day shift. You can also apply for that. And denial management, where we are working as a AR caller. So these four departments you can apply, and all these departments are having different responsibilities. Okay, you are not only single person or the department who is responsible for everything. Okay, just so generally this process is what exactly we'll do. What is our role? I'll try to explain you. So this is the consider that this is our client. Okay, Texas Multi Speciality Hospital. Okay, we are working for US. So most of the US hospitals, individual doctors, okay, clinics, they are our clients in our company. Anywhere you are joining. So we are working on behalf of them as a billing department. Okay, under billing department, just I shown you how many departments are there, right? So billing department work is whatever patients are coming to this hospital and taking services, we have to deal with their insurance to submit the claim form. Okay, more than 500 insurance companies are there in the market in US, and whatever insurance company insurance ID card provided by patient. Okay, it can be a Blue Cross Blue Shield, it can be a United Healthcare, it can be a Medicare. Okay, like this, so many insurance companies are there. So one of the department from billing department, one of the department will submit the claim form to patient's insurance company. Okay, you are not responsible starting first time when claim is going. Okay, then insurance company will process the claim, and whenever they are processing the claim, they used to send us a receipt. Okay, once they process the claim. So that receipt is called as explanation of benefit. So whatever receipt is mentioned, means whatever things are mentioned on the receipt, one department is there, payment posting team. They are posting that into the patient account. Okay, as a AR, what we are doing, whenever we are receiving, so the uh, claim form we are sending. Okay, multiple ways are there to submit the claim form. We'll see that. And once they process the claim, we are receiving a receipt that is called as EOB. So that EOB will be posted into the system, and if on any account or on any EOB, if any denial is there, that means insurance has not paid anything and they denied something. So that time we used to, as a AR, we used to contact or we used to check on their web portal. Okay, what is the exact denial? The example is policy is not active on the date of service. This is one of the denial. So accordingly, we have to work on that as a AR. Okay, and then we have to take some action. Many denials are there without calling. Also, we can take the action. Okay, so as a AR, we used to work on denied claim so that our hospital will get a payment. Okay, so example policy has been terminated. This is the denial. So your responsibility is to find out the active insurance and rebill to the correct insurance, active insurance. Like this, almost 25 denials will cover in our training. That is more than enough to uh,
crack the interview, and also after joining in any company you are able to work. Okay, and same kind of training again you will get. Okay, so for this process all the departments are using a single app software. Okay, everybody is using the single software. Okay, according to their responsibilities they are entering such kind of information in the single software that called as a practice management software. Okay, so many practice management softwares are available in the market. Practice top PMS एप्लीकेशन फॉर यूएस। अगर हम ऐसे सर्च करेंगे तो आपको यूएस सॉरी यहाँ पे गूगल में आपको बहुत सारे एप्लीकेशन मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो नाम, यहाँ पे कुछ नाम आ रहे हैं। अथीना हेल, नेक्स्ट जेन, ECW, कैरियो, ओके, एडवांस एमडी, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। डिपेंड करेगा कौन से क्लाइंट के लिए कहाँ पे आप कैसे काम कर रहे हो, तो आपको उस सॉफ्टवेयर का ट्रेनिंग मिलेगा। ओके, सो लाइक बेसिक फंक्शनैलिटी विल बी सेम इन एवरी एप्लीकेशन। आपके मोबाइल में भी अगर आपके 2-3 बैंक है तो उसमें क्या होता है, बेसिक फंक्शनैलिटी सेम रहते हैं। भले ही मेरे पास 2 अकाउंट है, HDFC एंड ICICI, अगर उस एप्लीकेशन में जाऊंगा मैं तो आपको बेसिक फंक्शनैलिटी क्या रहते हैं, यू कैन व्यू योर बैलेंस, यू कैन ट्रांसफर सम अमाउंट टू समवन, यू कैन डाउनलोड स्टेटमेंट, यू कैन अप्लाई फॉर लोन, यू कैन ऐड बेनिफिशियरी। ऐसे बेसिक जो फंक्शनैलिटी है वो सभी बैंक के एप्लीकेशन में रहते हैं। सेम हियर इन प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जो बेसिक फंक्शनैलिटी है वो सभी जगह पे सेम रहेगी। ठीक है, तो आपको उसका ट्रेनिंग मिलेगा हर कंपनी में। एंड इन आवर ट्रेनिंग ऑल्सो internally, actually all these are the rented application, and the rent is also huge, like minimum 300 to $1,000 per month per user is the rent। ठीक है, तो मैं आपको एक रिकॉर्डेड सेशन दूंगा जिसमें रियल टाइम एप्लीकेशन पे आपको सारे सिनेरियोज कवर होंगे। एंड ऑल्सो वी हैव स्टार्टेड टू क्रिएट अवर ओन एप्लीकेशन फॉर ट्रेनिंग पर्पज। ठीक है, तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर कौन से डिपार्टमेंट क्या क्या करते हैं, वो क्या क्या इंफॉर्मेशन एंटर करते हैं, एज ए AR हम कौन से स्क्रीन पे काम करेंगे, अगर कोई क्लेम हैंडल कर रहे हैं तो वहां पे हमें एक्शन कैसी लेनी है। ठीक है, यहाँ पे जो भी डिनायल आया है उसको फिर यहाँ पे नोट्स कैसे एंटर करना है। ठीक है, एवरीथिंग विल बी कवर, तो दैट आपको आइडिया आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर कुछ क्लेम पे करेक्शन किया है, क्लेम डिनाई हुआ था कुछ कोडिंग रिलेटेड इश्यूज, एंड मैंने उस पे करेक्शंस करके उसको रीसबमिट में कर रहा हूँ। ठीक है, तो दैट टाइम I have to select as a resubmit as a corrected claim, तो all these things will be covered, don't worry। ठीक है, तो स्टिल दिस एप्लीकेशन इज अंडर डेवलपमेंट। ठीक है, अभी भी सब कुछ रेडी नहीं है। ठीक है, बट दिस इज अवर इंटरनल एप्लीकेशन बिकॉज 300 to $500 पर मंथ, वेरी कॉस्टली। ठीक है, बट आपको रियल टाइम एप्लीकेशन का भी मैं रिकॉर्डेड सेशन दूंगा। ठीक है, एंड देन यू विल हैव एक्सेस फॉर दैट। So you have to see that every week, at least once in a week, you have to go through that. सिलेबस आपका जो भी सिलेबस डिसाइडेड है, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ओनली वी आर कवरिंग योर सेशंस। ठीक है, सो ऑलमोस्ट हमें 5 वीकेंड्स लगेंगे, 2 hours एवरी डे, एवरी सैटरडे एंड संडे। ठीक है, जनरली वी आर टेकिंग 30 सेशंस, सो दीज आर सम ऑफर लेटर्स फ्रॉम आवर प्रीवियस बैचेस। Okay, like this is for the B Pro, this is for Medsun, this is for R1, this is for Ascent. Okay, and good on good packages they are working. Let's see. Someone is going as a fresher, they will get less salary, right? So see here how much is the package, 3.16. Okay, this is for May month, this year only. R1, this is 330. Okay, this is also May 2025.
Ascent, Nagpur. Okay, 5.7 lakh per annum. Okay, Wipro. This is the basic salary actually. Some more components are there, so almost 2.6 package definitely was there. These are some more application. Sorry, offer letters. Triumph Resource Management. Okay, so here we can provide you a reference after our training, and most of the time they are taking freshers from our batches. Okay, so we are having. You can consider we are having tie up with them. Then you can see here Huron 5.17. This one is for first inside 5.82. Okay, this is also this year February 3rd. This is Omega. Package is not mentioned. That's fine. But I hope you got the idea. Okay, here only 3.91, right? So every company, in most of the companies, our students are placed in last batch, means old batches, past batches. Okay, this kind of training certificate you will get it as 3 months training you have completed. You can mention in your resume if you are going as a fresher. Okay, if you are working somewhere, then you can contact me. I'll guide you how to go as an experience. Okay, so this is only the inquiry session. Maybe we used to take it on first day, but let's start. Anybody is having any question till now? Yes, guys, you can ask. Any question? No, sir. Till now, I don't have any question. Okay. So we have created 5 notes for you, 5 parts of notes. First notes is the basic note based. We will try to create your base to understand the denials. And then second 2 notes are for the denials only. Almost 25 denials we'll cover in that. And for each and every scenario, flowchart will be there on call. What questions you have to ask. Okay, what actions you have to take. Every and how the EOB look like. Okay, multiple insurance companies or these kind of receipts are there. How to analyze those EOB. Everything will be covered in that. Then insurance calling notes is there. Scenario wise, what questions we have to ask, how to write the notes and all. And once you join any company, then after joining the company, what will happen? Okay, how to start your day, how to yeah, means achieve your target, on which insurances you are going to work, what kind of applications you are going to on. Whenever they are providing your training, then what you have to make sure that I have given you the list of questions that you have to see. These are covered in your training, or else you will struggle. What information you should know about the practice management software before starting your work. So whenever they are providing your training, you have to check that these points are covered in your training or not, or else again you will struggle while working. So like this, everything is mentioned in these notes. Okay, and first notes is this one. Session wise notes are there, and actually I am updating it now. So part one from your batch only, I'm going to provide you. Uh, Updated notes. Okay, so everything will be there, and according to this syllabus only, we will create the notes and we'll cover your. Okay, so this is the first session. So as we know, uh, so many insurances are there in the market, and every insurance company is doing the business. ठीक है, कोई भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोई इंश्योरेंस नहीं प्रोवाइड करेगा एक्सेप्ट गवर्नमेंट इंश्योरेंसेस. ठीक है, तो इंडिया में भी अभी गवर्नमेंट इंश्योरेंस गवर्नमेंट की तरफ से हमें मिलता है. ऑलमोस्ट 5 लाख इज कवरिंग अंडर दैट. अगर आपको उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर आपके फैमिली या फिर आपके पास वो इंश्योरेंस नहीं है जिसमें 5 लाख कवर होता है, विदाउट पेइंग एनीथिंग यू कैन गेट दैट इंश्योरेंस आईडी कार्ड.
ठीक है, तो लेट मी नो, यू कैन पिंग मी, I'll give you the information and you can apply from that website and you can insure your family. Each and every member 5 lakh rupees will be there. In US also, US governments are providing some insurances for their US citizens. Everybody is not eligible for that, but almost 40% of the population is covered by US government insurances. Okay, so later in coming sessions, we will have a separate sessions to understand each and everything. So don't worry. So these are some insurances, and many of us are already familiar with these insurances. Healthcare insurance, which are for covering the healthcare services, right? Whatever bills are there for the healthcare services will be covered by the healthcare insurance. So you will get a healthcare insurance whenever you are joining in any company from your employer to cover your family. So currently where I am working, 12 lakh rupees are covered in my insurance, which is provided by my employer. All family members are added into that policy, right? You can also get such kind of insurance anywhere. General insurance is there. General insurance means many people want to save the taxes and also want to get the benefit or the lump sum amount after some time period like 10 year, 15 year. Okay. So such kind of insurance plans are called as general insurances. Okay. So many plans are there. Okay. But we have to focus on the healthcare insurance because healthcare policies should be there. Okay. If you are working on any dental client, then patient should have dental insurance. We cannot send our claim form to normal insurances. We should have dental insurance plan, right? And it will cover only dental related service, not other services. Security insurances, like if we are keeping any valuable assets in the bank or the locker or some security places, then that time we can take the security insurance. If something happen, any incident, then it will be covered from your insurance. Fire insurances are there, especially warehouses are taking. अगर वहां पे बहुत सारी चीजें रखते हैं तो वेयर हाउस, यानी आपको भी पता है कि स्पेशली it is for storing huge amount of multiple things, right? तो अगर वहां पे कुछ होता है तो फायर इंश्योरेंसेस होते हैं, ठीक है? ऑटो इंश्योरेंस, अगर आप बाइक लेते हो, कार लेते हो, तो इट्स मैंडेटरी थिंग दैट यू हैव टू टेक द ऑटो इंश्योरेंस, राइट? एंड इट विल कवर यू एंड योर व्हीकल एंड द नेक्स्ट पर्सन हु गॉट हिट फ्रॉम योर व्हीकल, ठीक है? तो ये सारी चीजें उस इंश्योरेंस में कवर होती है, उसे कहते हैं ऑटो इंश्योरेंस। तो जब हम काम करेंगे कोई भी पेशेंट के लिए, अगर उसका एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, तो उसके पास ऑटो इंश्योरेंस होना जरूरी है। नॉर्मल इंश्योरेंस विल नॉट कवर हिज सर्विसेज, ठीक है? सो कमिंग सेशंस विल सी, डोंट वरी। ट्रैवलिंग इंश्योरेंस, हमें पता है कि इफ यू आर ट्रैवलिंग थ्रू फ्लाइट और ट्रेन, देन इन योर टिकट इटसेल्फ, नाउअडेज in your ticket itself, traveling insurance amount will be there. In US, they are following this from long time. Okay. Almost from 40-45 years, they are working. Their government is working on this sector. And big part of the budget, every year, they are spending on healthcare. ठीक है? It's very expensive thing. Expensive मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ? Example I can give you. अगर एक स्मॉल जनरल चेकअप भी करना है, डॉक्टर के पास बस जाना है और सिर्फ चेकअप करना है कि देखो मुझे ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है, आई एम नॉट फीलिंग वेल, प्लीज चेक। सिर्फ चेकअप के लिए मिनिमम $300 चार्जेस आर देयर। इफ यू कन्वर्ट दैट $300 इनटू इंडियन रुपीज, तो ऑलमोस्ट 18,000, ठीक है? दिस मच। अब यहाँ पे हमारे यहाँ पे तो 500, मैक्सिमम $1,000, सॉरी 1,000 रुपीज इज इनफ, ठीक है? बट इन यूएस इट इज वेरी एक्सपेंसिव। अगर वहां पे आपको एक दांत यानी रूट कैनल भी करना है, तो वहां पे $2,000 to $3,000 आर द चार्जेस। चलो सबसे कम $2,000 भी हम लेंगे, तो दैट इज द 1,80,000। फिर आप सोच सकते हो कि कितना एक्सपेंसिव है। अगर यूएस में किसी के पास इंश्योरेंस नहीं है और उसको अगर मेजर सर्जरी अगर कुछ लेना है, सो सच काइंड ऑफ पीपल आर कमिंग टू इंडिया और एनी अदर कंट्रीज to take the service. They are staying here for 1-2 months and they are going back. Then also they can save a lot. ठीक है? 30% अमाउंट में ही उनका सब कुछ ये हो जाएगा, ठीक है?
So such kind of people are every day. People are coming to or going to other countries if they don't have insurance or their insurance is not covering such kind of services. अगर उन्होंने ऐसा इंश्योरेंस लिया ही नहीं है जिसमें ये मेजर सर्जरीज वगैरह कवर होती है, तो इट्स वेरी हार्ड टू अफोर्ड सच काइंड ऑफ एक्सपेंसिव सर्विसेज. तो इसीलिए वहाँ पे सारे ही लोग बहुत अवेयर हैं. आ, इसीलिए 98% पॉपुलेशन के पास वहाँ पे हेल्थ केयर इंश्योरेंस है. ठीक है. एट दिस पॉइंट वी डोंट नो फॉर विच स्पेशलिटी यू आर गोइंग टू वर्क. कौन से कंपनी में आपको जॉब मिलेगा, वहाँ पे कौन सा क्लाइंट रहेगा. और क्लाइंट मीन्स नथिंग बट द यूएस हॉस्पिटल्स और द डॉक्टर्स. तो वहाँ पे कौन से स्पेशलिटी के लिए आप काम करोगे. बट एटलीस्ट वी शुड नो सम स्पेशलिटी नेम्स. इफ यू आर गोइंग एज ए एक्सपीरियंस देन इन इंटरव्यू दे विल आस्क यू फॉर विच स्पेशलिटी यू आर वर्किंग. सो न्यूरोलॉजिस्ट जो भी ब्रेन रिलेटेड रहते हैं, न्यूरो सिस्टम रिलेटेड रहते हैं, वो न्यूरोलॉजिस्ट प्रोवाइड करते हैं. पेडियाट्रिक यानी बच्चों के लिए बिलो 5 years जो भी रहते हैं उनके लिए पेडियाट्रिक रहते हैं. ठीक है. गायनेकोलॉजिस्ट जो फीमेल रहते हैं उनके लिए गायनेकोलॉजिस्ट रहते हैं. ठीक है. और ऑर्थोपेडिक बोन रिलेटेड एनी सर्विस इफ नीडेड. कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट रिलेटेड जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं दे आर कार्डियोलॉजिस्ट. जनरल फिजिशियन जनरली अवर जो हमारे फैमिली डॉक्टर्स रहते हैं जो बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं दे आर ऑल्सो देयर स्पेशलिटी इज द इंटरनल मेडिसिन also called as general physician. Dentist we already know. Anesthesiologist they are specialist. They only know that how much anesthesia is needed for how much time, especially for the major surgeries. Anesthesiologist is present and he is only deciding how much anesthesia, how many units needs to be provided, and when, like after half an hour one unit, after 40 minutes again one unit, like that he will manage that. Okay, some more specialties are there, and if big clients are there, if you are working for big clients, then multi-speciality hospital will be there. So all these specialists are there under the same client. Okay, like I work for, especially if you are going for big companies, then they are having big clients. Multi-specialist hospitals are there, and we don't know for that hospital how many branches are there. Okay, how many doctors are there. After joining we will get all the information. I work for one of the bigger client, that's name is Med Synergies, and almost 20,000 doctors are there under that facility. 20,000 doctors. I'm not saying 20,000 patients every day. 20,000 doctors. Maybe they are having so many branches in the city and the country, but for that client we work and we splitted that team, and almost 2,000 people are working on in our company for that client, and they have outsourced to 3 companies in India, and every company is having 2,000 employees for that client. Okay, just give me a second, guys. Okay, sorry guys, somebody was there on door. So स्पेशलिटी एट दिस पॉइंट वी डोंट नो, बट हमारा जो काम रहेगा वो सेम ही रहेगा. कहीं पे भी जाओ, कोई भी स्पेशलिटी या फिर कोई भी स्टेट के लिए आप काम करो, आप टेक्सास के लिए करो या फिर कैलिफोर्निया के लिए करो, ओहायो के लिए करो, तो स्टेट आप देख सकते हो. और इन सम सेशन विल सी हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर, विच स्टेट इज बिगर. ओके, विल कवर दैट, डोंट वरी. एटलीस्ट आपको कुछ नाम पता रहने चाहिए यूएस के स्टेट्स के. ठीक है. तो वहां पे बिलिंग डिपार्टमेंट में 2 टाइप के बिल होते हैं. अब आप इंडिया में अगर कोई हॉस्पिटल में जाते हो, आपका फैमिली मेंबर या फिर कोई फ्रेंड अगर एडमिट होता है फॉर 1 वीक 2 वीक, तो आपको एक सिंगल फाइल मिलेगी जहाँ पे सारे आपके बिल्स रहेंगे. उसमें यानी मेडिसिन चार्जेस, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, डॉक्टर फीस,
ठीक है, हॉस्पिटल चार्जेस, रूम चार्जेस, एवरीथिंग विल बी देयर ऑन द सिंगल बिल, ठीक है। बट यूएस में ऐसा नहीं है, उन्होंने सेग्रीगेट किए इन टू पार्ट्स। और यूएस गवर्नमेंट का कुछ कंट्रोल है यूएस हेल्थ केयर में, ठीक है। उन्होंने कुछ रूल्स क्रिएट किए हैं, एवरीबडी हैव टू फॉलो दैट, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया में अगर कोई आपके पास इंश्योरेंस है तो हर इंश्योरेंस कंपनी का अलग क्लेम फॉर्म है, ठीक है, ओन क्लेम फॉर्म। बट यूएस में वैसा नहीं है। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन एंड द सीएमएस, such kind so many departments are there and they are generating these rules. तो यूएस गवर्नमेंट ने यहाँ पे बिल दो पार्ट में सेग्रीगेट किया है। वन इज द हॉस्पिटल बिलिंग, दैट मीन्स हॉस्पिटल चार्जेस, अदर इज द डॉक्टर्स चार्जेस, कॉल्ड एज फिजिशियन बिलिंग। एंड इन आवर ट्रेनिंग वी आर गोइंग टू फोकस ऑन फिजिशियन बिलिंग, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ओपनिंग फिजिशियन बिलिंग के लिए रहते हैं। देयर इज अ रीजन, ओके, व्हाई? बिकॉज हॉस्पिटल बिलिंग, हॉस्पिटल बिल्स आर ह्यूज बिल्स, मोर देन $20,000 $30,000 बिल्स आर देयर। तो हॉस्पिटल के लिए ऐसे बिग बिल्स दे डोंट वांट टू टेक अ रिस्क, ठीक है। बट इन सम कंपनीज इफ दे आर हैंडलिंग दैट क्लाइंट फ्रॉम लॉन्ग टाइम, लाइक लास्ट 20 years they are working on such kind of client. So such company is having hospital billing as well, and you are eligible to apply for that company as well. They will consider your profile, you are having physician billing knowledge. They will provide you again the hospital billing training. From our past batches, 4 to 5 students got a job in hospital billing company also. But very few companies are having this process. Okay. तो इसके लिए सेपरेट क्लेम फॉर्म रहेगा, ठीक है। जो हॉस्पिटल बिलिंग रहता है उसके लिए UB04 करके है, ठीक है, हम देखेंगे वो क्लेम फॉर्म। एंड फॉर फिजिशियन बिलिंग वी आर हैविंग CMS 1500। ओके, तो CMS 1500 फॉर्म कैसा दिखेगा, जो फिजिशियन बिलिंग के लिए रहता है ऐसा दिखता है ऑल ओवर यूएस, ठीक है। एवरी डॉक्टर की फीस के लिए ऐसा क्लेम फॉर्म हम इंश्योरेंस को हमारे सॉफ्टवेयर में से जाएगा, सॉफ्टवेयर कोई भी रहे, ठीक है। एवरी क्लेम फॉर्म इज द यूनिक क्लेम फॉर्म, देयर इज अ बार कोड, वी कैनॉट यूज दिस क्लेम फॉर्म फॉर मल्टीपल पेशेंट, ठीक है। या फिर एक ही पेशेंट बार बार आ रहा है तो उसके लिए मल्टीपल टाइम वी कैनॉट यूज दिस क्लेम फॉर्म। सो वील हैव द सेपरेट सेशन फॉर दिस, इट इज हैविंग 33 boxes, and from this almost 10 to 12 boxes you have to remember one of the interview question। इंटरव्यू में आपको कुछ रैंडम बॉक्सेस पूछे जाएंगे, एंड इतना इजी क्वेश्चन अगर आप एक 10-12 बॉक्सेस आप अगर याद रखते हो कि ये बॉक्स प्रायर ऑथराइजेशन के लिए है 23 नंबर का, 25 इज फॉर द टैक्स आईडी नंबर, ठीक है। ऐसे आपको 8 से 10 बॉक्सेस आपको याद रखने हैं, एंड दैट इज दे विल रैंडमली आस्क यू टेल मी बॉक्स नंबर 17 is for what purpose, tell me box number 25, like this randomly they will ask you and you should be able to answer for that। तो इजी है, डोंट वरी, अगर आप रोज अगर पढ़ते हो नोट्स तो इजीली आप याद रखोगे, ठीक है। सो दिस क्लेम फॉर्म इज फॉर द फिजिशियन बिलिंग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, ये जो क्लेम फॉर्म है, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले का बताया था कि देर इज अदर डिपार्टमेंट हु आर सेंडिंग दिस क्लेम फॉर्म टू इंश्योरेंस कंपनी। जो भी पेशेंट के पास इंश्योरेंस रहेगा उसको ये क्लेम फॉर्म जाएगा। तो ये क्लेम फॉर्म कैसे बिल कर रहे हैं, यानी उस इंश्योरेंस को कैसे हम भेज रहे हैं, ठीक है। तो देयर आर मल्टीपल वेज टू सबमिट अवर क्लेम फॉर्म, ठीक है। तो दीज आर 4 ways टू सबमिट द क्लेम फॉर्म फ्रॉम आवर सॉफ्टवेयर, फ्रॉम आवर हॉस्पिटल और द बिलिंग डिपार्टमेंट टू द पेशेंट्स इंश्योरेंस। लाइक वहां पे तो 500+ इंश्योरेंस कंपनीज है और हर पेशेंट के पास अलग इंश्योरेंस रह सकता है, ठीक है। अगर 100 पेशेंट आज आ रहे हैं तो हो सकता है 100 पेशेंट के पास ऑलमोस्ट 30 टाइप के इंश्योरेंसेस हो, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम आर टेकिंग द पॉपुलर इंश्योरेंसेस, ठीक है। बट हो सकता है कि 30 टाइप के इंश्योरेंस हो, तो 30 उस दिन हमको 30 टाइप के इंश्योरेंसेस को क्लेम फॉर्म भेजना है, ठीक है। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस टू क्रिएट अ क्लेम फॉर्म, एवरीबडी हैव टू एंटर द इंफॉर्मेशन, विल सी दैट। तो ये फर्स्ट प्रीफर्ड वे इज द इलेक्ट्रॉनिक वे, ठीक है। दैट मीन्स हमारे सॉफ्टवेयर से इलेक्ट्रॉनिकली क्लेम फॉर्म विल गो टू द इंश्योरेंस, इट इज द फास्टेस्ट वे। आज बिल कर रहे हैं, आज ही इंश्योरेंस के पास मिल जाएगा क्लेम, ठीक है। और ये क्लेम फॉर्म जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, ठीक है। हर क्लेम फॉर्म के लिए
अगर इलेक्ट्रॉनिक क्लेम फॉर्म हम देख रहे हैं तो इट विल चार्ज $4 to $5 फॉर एवरी क्लेम। अगर आप हार्ड कॉपी, यानी हमारे प्रिंटर में हॉस्पिटल में ये हार्ड कॉपीज ऑफ यानी ब्लैंक क्लेम फॉर्म रहेंगे, और अगर आपने पेपर बिल किया है, ठीक है, सेकंड ऑप्शन इज पेपर बिल। दैट मीन्स आपने हमारे एप्लीकेशन में क्लिक किया है कि पेपर बिल पे आपने क्लिक किया, तो वहां पे प्रिंट होगा एंड somebody इज रिस्पॉन्सिबल इन हॉस्पिटल हु इज सेंडिंग दैट क्लेम फॉर्म थ्रू कुरियर कंपनी टू द इंश्योरेंस कंपनी एंड द एड्रेस इज मेंशन ऑन क्लेम फॉर्म ओनली। ठीक है, शिकागो, कैलिफोर्निया, एंड जो भी उसका zip code है, जो भी एड्रेस वहां पे या क्लेम फॉर्म पे रहेगा, वहां पे वो क्लेम फॉर्म हमारा थ्रू कुरियर कंपनी भेजेगा। तो हार्ड कॉपी ऑफ द क्लेम फॉर्म चार्जेस आर 18 to $20 फॉर ईच एंड एवरी क्लेम एंड कुरियर चार्जेस आर डिपेंड ऑन द डिस्टेंस। ठीक है, तो दिस इज द सेकंड वे टू सबमिट अवर क्लेम फॉर्म, दैट इज द पेपर क्लेम। तो इलेक्ट्रॉनिक क्लेम फॉर्म भेजने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? जैसे आपको अगर ईमेल भेजना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, बताइए। आपको अगर किसी को ईमेल भेजना है, ईमेल एड्रेस। यस दैट इज द इम्पोर्टेंट, राइट? एक्यूरेट ईमेल एड्रेस होना चाहिए आपके पास। अगर उसमें कुछ भी स्मॉल चेंज है तो वो गलत ईमेल को पहुंचेगा वो, राइट? वैसे ही अगर हमें इलेक्ट्रॉनिकली क्लेम फॉर्म भेजना है, सो दिस इज द सैंपल इंश्योरेंस आईडी कार्ड फॉर यूनाइटेड हेल्थ केयर। ठीक है, अगर हमें इलेक्ट्रॉनिकली क्लेम फॉर्म भेजना है तो देर इज अ इलेक्ट्रॉनिक पेयर आईडी मेंशन ऑन द आईडी कार्ड। You can see here payer ID. 5-digit number is there, right? So for each and every insurance is having electronic payer ID that needs to be used to submit our claim form through electronically. अगर वहां पे स्मॉल डिजिट भी चेंज है तो इट विल गो टू अदर इंश्योरेंस। ठीक है, तो हमारे सॉफ्टवेयर में जब भी हम इंश्योरेंस सिलेक्ट करेंगे उस पेशेंट के लिए, तो हम इलेक्ट्रॉनिक पेयर आईडी देखेंगे जो भी आईडी कार्ड पे है। एंड हो सकता है कि यूनाइटेड हेल्थ केयर के भी बहुत सारे प्लान्स हो और हर प्लान के लिए अलग पेयर आईडी हो। ठीक है, हमारे एप्लीकेशन में तो जो भी पेशेंट के इंश्योरेंस आईडी कार्ड पे पेयर आईडी मेंशन है उसी को हमें सिलेक्ट करके बिल करना है। ठीक है, तो अदर डिपार्टमेंट जो भी हमारे एलिजिबिलिटी एंड बेनिफिट्स वेरिफिकेशन है, दे आर सिलेक्टिंग द करेक्ट इंश्योरेंस। ठीक है, समटाइम्स वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू एड द इंश्योरेंस। ठीक है, सेकंड इज द पेपर क्लेम। तो पेपर क्लेम भेजने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इज यू शुड हैव द करेक्ट क्लेम मेलिंग एड्रेस। तो जो भी इंश्योरेंस है उसके इंश्योरेंस आईडी कार्ड पे बैक साइड में उनका एड्रेस मेंशन होता है कि कहाँ पे क्लेम फॉर्म भेजना है। यू कैन सी हियर मेडिकल क्लेम, पीओ बॉक्स 74088 एटलांटा जॉर्जिया। ठीक है, ऐसे यहाँ पे फोन नंबर्स भी होते हैं। मल्टीपल फोन नंबर्स आर देयर, लाइक one phone number is for the hospital doctors, one phone number is for the patient. So this first phone number is for the patient, this provider means the doctor's hospital, this phone number is for them, website is also there. So हर इंश्योरेंस आईडी कार्ड पे ये सारे डिटेल्स होते हैं। यहाँ पे देखो, पॉलिसी नंबर दैट इज द मेंबर आईडी, पेशेंट का नाम होता है, उसके डिपेंडेंट्स कौन कौन ऐड है पॉलिसी में। ठीक है, उसका ग्रुप नंबर में कुछ कुछ पॉलिसीज ग्रुप पॉलिसीज रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ चार्जेस भी दिए हुए हैं, इन सम केसेस ही हैव टू पे। ठीक है, सो दीज आर सम डिटेल्स। हम और भी इंश्योरेंस आईडी कार्ड्स देखेंगे। ठीक है, तो ये दिस इज द सेकंड वे। थर्ड इज द फैक्स। तो फैक्स नंबर अगर आपके पास है इंश्योरेंस का, ठीक है, तो नाउ डेज अगर आप 8-10 साल पहले अगर सोचोगे तो वहां पे फैक्स कैसा था, वहां पे फैक्स मशीन, फिजिकल मशीन रहती थी। ठीक है, प्रिंटर जैसी दिखने वाली एक छोटी फैक्स मशीन रहती थी, और वहां पे हमें यहाँ पे हमें वो फैक्स मशीन में वो फॉर्म डालना है एंड इट विल गेट स्कैन, एंड उस इंश्योरेंस कंपनी के पास फैक्स मशीन रहती है, वहां पे वो प्रिंट होगा। ठीक है, तो वो 10 साल पहले की बात है। अभी ये फिजिकल फैक्स मशीन नहीं है। नाउअडेज ई फैक्स इज देयर। ठीक है, फैक्स नंबर विल बी देयर, बट ई फैक्स मीन्स जैसे सेम ईमेल, बट इंस्टेड ऑफ ईमेल एड्रेस वी आर यूजिंग फैक्स नंबर। तो उसके जैसा हमारा जीमेल होता है वैसे ई फैक्स का कुछ एप्लीकेशन रहेगा, उसका ट्रेनिंग आपको एक 10 मिनट में ही आप अंडरस्टैंड करोगे कि हमें फैक्स कैसे भेजना है। ठीक है, बहुत इजी रहता है। जैसे आपको अगर ईमेल भेजना आता है तो यू कैन सेंड ई फैक्स ऑल्सो।
ठीक है, दिस इज द फर्स्ट थर्ड वे एंड वेरी फ्यू कंपनीज आर हैविंग दिस ऑप्शन। जैसे अगर आप बार बार क्लेम फॉर्म भेज रहे हो इंश्योरेंस को और उनको 3 बार भेजने के बाद भी उनको मिला नहीं, मे बी वी आर ट्राइंग टू सेंड ऑन देयर मेलिंग एड्रेस बट ड्यू टू सम रीजन दे आर नॉट रिसीविंग, तो आप उनको पूछ सकते हो कि आर यू एक्सेप्टिंग क्लेम फॉर्म थ्रू फैक्स। अगर वो यस बोल रहे हैं तो वी हैव टू टेक देयर फैक्स नंबर एंड यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल टू सबमिट द क्लेम फॉर्म थ्रू फैक्स। ठीक है, इजी है, 5 मिनट्स में आप इजीली भेज सकते हो। एंड fourth way is the insurance website. So some insurance company is having this facility on their website. We can upload claim form on their website. ठीक है, but most preferred way is the electronic way. ठीक है, नाउ अगर इंश्योरेंस ने क्लेम उनको रिसीव हो गया क्लेम एंड दे प्रोसेस द क्लेम, दे सेंट अस अ ईओबी दैट मीन्स रिसिप्ट एंड दे डिसाइडेड टू गिव अस अ पेमेंट। ठीक है, हमने क्लेम फॉर्म बिल किया है $1000 का, एज पर द पेशेंट पॉलिसी प्लान ऑल द सर्विसेज आर कवरिंग। ठीक है, तो जो भी $1000 का क्लेम है उसमें से वो डिसाइड करेंगे जितना भी अमाउंट है, फॉर एग्जाम्पल $800 दे डिसाइडेड टू पे टू द हॉस्पिटल। सो हाउ वी आर रिसीविंग पेमेंट फ्रॉम दीज इंश्योरेंसेस? ठीक है, तो देयर आर 3 ways टू रिसीव द पेमेंट फ्रॉम पेशेंट्स इंश्योरेंस कंपनी। फर्स्ट प्रिफर्ड वे इज द इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, यानी जैसे आप इलेक्ट्रॉनिकली किसी को भी ऑनलाइन पेमेंट यूपीआई वगैरह या फिर उसके फोन नंबर से या फिर उसका अकाउंट आईडी है तो हम अकाउंट नंबर ऐड करेंगे हमारे एप्लीकेशन में, राइट? तो दैट्स द इलेक्ट्रॉनिक वे एंड दिस इज द मोस्ट प्रीफर्ड वे। अगर हमें इंश्योरेंस के तरफ से अगर इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट चाहिए तो देर इज अ प्रोसेस, प्रॉपर प्रोसेस, देर इज अनदर डिपार्टमेंट एंड दे हैव टू फिल सो मेनी फॉर्म्स टू सेट अप दैट इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर अगर वो एक बार सेटअप हो गया तो एवरी टाइम हम किसी भी पेशेंट या कितने भी पेशेंट को बिल करेंगे तो एवरी टाइम दैट इंश्योरेंस कंपनी विल पे थ्रू द ईएफटी ओनली एंड इट्स द फास्टेस्ट वे। आज पे कर दिया, तुरंत 2-3 मिनट में हमारे हॉस्पिटल के अकाउंट में वो अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा, राइट? सेम लाइक हाउ वी आर सेंडिंग ऑनलाइन पेमेंट, राइट? सो दैट्स द मोस्ट प्रीफर्ड वे। Second is the paper check. They are sending the paper check through courier company to our billing address, hospital billing address. So obviously it will take 8 to 10 days to receive that check. वहां पे फिर चेक हम डिपॉजिट करेंगे, फिर वो अकाउंट में जमा होने के लिए और 2-3 दिन लेगा। ठीक है, अगर उन्होंने गलत एड्रेस यूज किया तो इट विल गो समवेयर एल्स। ठीक है, so that's the reason preferred way is the EFT. अगर किसी ने आपको बोला है कि EFT थ्रू पे हुआ है, 100% इट इज क्रेडिटेड इनटू द करेक्ट अकाउंट। ठीक है, ऐसे ऑटोमेटिकली वो किसी को भी गलत जगह पे हो फंड ट्रांसफर नहीं करते। थर्ड वे इज द वर्चुअल क्रेडिट कार्ड। आपने जैसे हमारा आपने बहुत बार देखा भी होगा सभी जनों ने क्रेडिट कार्ड, हाउ इट लुक लाइक, जस्ट लाइक द एटीएम ओनली, एटीएम कार्ड, बट वी विल हैव सम बैलेंस इन दैट। ठीक है, बट यहाँ पे मैंने क्या बोला है, वर्चुअल क्रेडिट कार्ड। एक्चुअल हार्ड कॉपी ऑफ द क्रेडिट कार्ड हमें नहीं मिलती है इंश्योरेंस की तरफ से। एक एक ऑथराइज पर्सन रहेगा हमारे क्लाइंट के यहाँ पे, उसी पर्सन को उस इंश्योरेंस के तरफ से एक तो इमेज आ सकती है उस कार्ड की या फिर कोई नंबर आ सकता है क्रेडिट कार्ड का। अगर इंश्योरेंस को $1000 पे करने हैं तो ओनली $1000 इज देयर इन दैट क्रेडिट कार्ड। ठीक है, जैसे हम एक कंसिडर करो 5-10 ईयर बैक मोबाइल में हम रिचार्ज कैसे करते थे, स्क्रैच कार्ड आता था, 10 रुपीज, 20 रुपीज, 50 रुपीज, और हम वो स्क्रैच करते थे, सम नंबर इज देयर एंड वी आर डायलिंग दैट नंबर इन अवर मोबाइल एंड विल गेट द टॉक टाइम। सेम लाइक हियर, वर्चुअल क्रेडिट कार्ड नंबर और द इमेज विल कम एंड वो वन टाइम यूजेबल नंबर रहेगा, तो जो भी ऑथराइज पर्सन है वो यूज करेगा and then that amount will credit into the bank. ठीक है, दिस इज द थर्ड वे। मोस्ट प्रीफर्ड वे इज द EFT, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो आप आज से क्या करोगे, एक स्मॉल कॉपी बनाओ, उसमें जो भी मैं एब्रीवेशंस बता रहा हूँ उसके लॉन्ग फॉर्म आपको याद रखने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे EFT बोला है तो दैट्स द इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, इंटरव्यूअर कैन आस्क यू टेल मी अबाउट समथिंग अबाउट द EFT। आपको फर्स्ट टाइम तो आपको पता रहना चाहिए कि लॉन्ग फॉर्म क्या है।
ठीक है, ऐसे बहुत सारे लॉन्ग फॉर्म आने वाले हैं, जैसे ईओबी मैंने बोला है, एक्सप्लेनेशन ऑफ बेनिफिट, ऑल्सो कॉल्ड एज ईओपी, एक्सप्लेनेशन ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो ये रिसिप्ट होती है, इंश्योरेंस की तरफ से हमें मिलती है। ठीक है, आई विल शो यू हाउ इट लुक लाइक। देखो, नोट्स वगैरह सब मैं प्रोवाइड करूंगा, डोंट वरी। सो इस टाइप की रिसिप्ट हमें मिलती है। हर इंश्योरेंस की रिसिप्ट का फॉर्मेट अलग रह सकता है, बट कॉलम्स सेम टाइप के कॉलम रहेंगे, इंफॉर्मेशन सेम टाइप की रहेगी। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज एक्सप्लेनेशन ऑफ बेनिफिट। ओके, रिसिप्ट, ईओबी। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एज ईओपी। अगर वो हमें ईओबी थ्रू कुरियर कंपनी भेज रहे हैं हमारे बिलिंग एड्रेस पे, हार्ड कॉपी थ्रू कुरियर कंपनी, सो इट इज कॉल्ड एज ईओबी। बट अगर वो इलेक्ट्रॉनिकली भेज रहे हैं, यानी हमारे सॉफ्टवेयर में ऑटो डायरेक्टली आ जाएगी वो इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, तो उसे कहते हैं ईआरए, इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस एडवाइस। इट इज नथिंग बट सेम ही रहेगी, बट इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ ईओपी। ठीक है, तो अभी एट दिस पॉइंट जस्ट रिमेंबर व्हाट इज मीन बाय ईओबी, ईओपी एंड ईआरए। ईओबी एंड ईओपी इज सेम, it's a paper, and ERA means electronic remittance advice, electronic version of EOB. We'll have the separate session to understand each and every column on the EOB, because this is the this is not the pure callable process. So by seeing EOB also we can take action many times. Okay, so बहुत सारे काम हमारे ईओबी देख के ही हो जाते हैं। ईओबी के ऑन द बेसिस ऑफ ईओबी वी कैन टेक एक्शन, वी डोंट हैव टू कॉल टू इंश्योरेंस एवरी टाइम। ठीक है, so we'll have separate session to understand the EOB, sample EOB. This is also one of the sample EOB. ठीक है, okay, this is the first session. Anybody is having any question till now, we can continue, uh, but before that, if anybody is having any question, then you can ask. Sir, we will get the video of this. Yes, actually we are recording your session, right? So Yes, we sir. will upload on our YouTube channel. You will get access for that. For every session, you will get access. Okay, sir. This is Thank the you. first session. I am stopping.